Yes, students, it's a critical juncture in the return of the native. In the last discussion, we have held a marriage between Klein and Justitia, but we will have to see what are the foundations of this marriage. I will come to you with a surprise question. I will come to you with a surprise question relating to the lecture. Marriage has been taken up. Justitia, Klein has left his mother for Justitia. Now Mrs. Hubright is all alone in the house. She is scared to see the empty rooms of the house, the silent environment, and the dark, pitchy nights. उसकी कुल कायनात क्लाइन था, टॉमसीन थी, दोनों ने ही उसकी बात नहीं मानी. So she is living like an empty nester. In the last lecture I told you what empty nester is. Who is an empty nester? Who is an empty nester? Who is an empty nester? नहीं पता? वो वालिदैन जिन्हें बुढ़ापे में उनके बच्चे छोड़ के चले जाए. They are empty nesters. The parents who are left alone by their children in the old age. They are called what? Empty nesters. So Mrs. Hubright is living like an empty nester. Empty nester. On the other hand, there are honeymoon days in the life of Klein and you, in the life of Klein and Justitia. And always honeymoon days are very sweet. Yeah. Klein is working for a school. He is working from dawn to dusk. He is working from dawn to dusk to establish a school for the people of Egdon Heath. अब Justitia को कितनी देर बाद इसने वादा किया था कि लेके जाऊंगा पेरिस? 6 months. ओके. आपको पता है इस शादी की बुनियाद क्या है? नंबर on one hand beauty, on the other hand leaving for Paris. So how weak foundation of marriage these are. Beauty, isn't it a weak foundation? क्या खूबसूरती को अगर शादी की बुनियाद बनाया जाए तो ये एक कमजोर बुनियाद नहीं है? ऐसा ही है जी? क्या फरमाइए मुदस्सिर. शरीयत में अगर मतलब उसे फॉलो करें तो किसी की खूबसूरती को देख के उसके अट्रैक्ट, मगर आजकल का जैसे नया भी चल रहा है कि खूबसूरतों को मतलब यही है
कि आपने खूबसूरती को फॉलो करना है, कि वो खूबसूरत है तो उससे शादी करनी चाहिए, ये ट्रेंड बन चुका है लेटेस्ट, अगर ऐसा है तो। ओके ओके ओके। अच्छा आप बताइए स्टूडेंट्स, बातें ना करें ना आपस में। ये बैक बेंचर्स आप तंग कर रहे हैं आज। मेरा सवाल ये है कि ब्यूटी इज इट इजंट इट अ वीक एंड फ्रीजाइल फाउंडेशन ऑफ मैरिज? ब्यूटी क्या कमजोर बुनियाद है या स्ट्रांग फाउंडेशन है? I say that in love it has a strong impact, but in later marriages it reflects. तो भाई लैला को क्यों अटैक था, वो इतनी बारीक से कैसे बोल हम बोले ना, सेम तो नजर वो अटैक। वो एक लैला को लिए फिरते हैं बेचारी को, तो वो काली थी। तो सर और भी एग्जाम्पल है ना, देखा जाए तो हिस्ट्री को आपको। सही है। जब उनको खूबसूरती नजर आती है, सर अगर आप अफ्रीकन देख लें तो उनके फेस पोस्चर बड़े अच्छे होते हैं, बहुत सारे हम अट्रैक्टिव होते हैं, बट दे हैव डार्क कलर। ओके आपको ओके। आजकल आपने अगर पीछे बैठे आपस की बातें करनी तो मैं आपको क्लास से बाहर निकाल दूंगा। स्टॉप इट। कितनी देर से आप ये मुसलसल प्रैक्टिस किए जा रही हैं स्टूडेंट्स? इज इट फेयर? जस्ट ज्वाइन द डिस्कशन इफ यू वांट। Why are you disturbing the whole environment of the class? Yes, carry on, Aftab. सर मुझे भाई की फेवरेट एक्ट्रेस है, मुझे कितनी कहने जा रहा हूँ डॉट सी होते हैं। अब उसे देखा जाए तो ऋतिक बारी तभी से भी ज्यादा आई थिंक से तो मगर उसमें क्या है, तो अफ्रीकन मतलब एक्टर फेमस एक्टर है, जो उसके पैरेंट के साथ उसके बेटी की मिसाल के ऊपर होती है, तो अगर उसे फॉलो करें तो एक तो खूबसूरती को देख के हम कैसे सीरत को देखना चाहिए ना। फिजिकल अपीयरेंस जो है वो किसी भी रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए बुनियाद है, उससे एंट्री इम्पोर्टेंट। जो पहली चीजें आती है उसमें बिहेवियर आ सकता है, उसमें उसका क्या नाम है मेंटल हार्मोनी हो सकती है किसी भी रिलेशनशिप को बिल्डअप करने के लिए, और फिजिकल अपीयरेंस और फिजिकल आउटलुक इज ऑफ सेकेंडरी इम्पोर्टेंस। अगर उसको प्राइमरी इम्पोर्टेंस देंगे तो इट विल रिजल्ट इन अ वेरी वीक फ्रेजाइल रिलेशनशिप। You mean to say that physical appearance is a fragile foundation? This is what you say? Okay. Okay. Mental harmony is a strong bond. But there was no mental harmony. यहाँ पे हुआ क्या था? एक क्रिसमस के मौके पर एक प्ले स्टेज हुआ था, जिसमें एक लड़की ने अपना गाइस चेंज करके वो प्ले किया, उसके बाद उसके गाइस को वो समझ गया। And Klein saw Justitia once. He was stunned. He left his heart over there and they fell in love. अब ये उसे देखने से पहले देखिए, यूस्टिशिया इनकी मैरिज की बुनियाद देखिए। यूस्टिशिया क्लाइन को देखने से पहले ही उसकी गर्विदा हो गई हुई थी। You know? She had fallen in love with Klein without seeing him because he was, number one, he was living in Paris. Number two, he could take her to Paris, and in this way he could cause his relief. He could cause her relief from this monotonous village at the Heath. Yes, of course, she loved her ambition only. Yes, एक तरफ फाइनेंशियल अट्रैक्शन थी, दूसरी तरफ फेशियल अट्रैक्शन थी। So the base of this marriage, if we reciprocally in a reciprocal way we see,
Both the side, on one side there was a facial attraction, on the other side there was financial attraction. Okay, so it was the combination of facial and financial attraction. It was the combination of facial and financial attraction. Both the attractions are fragile, unstable, and weak. Now marriage has been taken up. They have started their life. They have started the post-marital life. They have started the post-marital life, but the time is very fast. 6 months are going to come to an end, very close at hand. That the 6 months are going to be terminated and the gate of honeymoon days is going to be closed forever. अब क्या हुआ आपको देखिए, he has been working for the school, for the children. इतना इसने काम किया क्योंकि इसके ज़हन में कमिटमेंट थी. He is the man of commitment. कि I have surrendered my commitment to my wife that I will lead her to Paris after 6 months. So he was committed to complete the project of his school within 6 months. Am I clear? That's why he was working from dawn to dusk for the establishment of the school. अब क्या हुआ इस काविश में? His eyesight began to sink down. His eyesight began to die. क्या हुआ? क्लाइम की आंखों की बीनाई मध्यम पड़ने लगी. क्लाइम की बीनाई मध्यम पड़ने लगी. Oh, the critical day is going to start. Oh, all right. It's the time. He comes to Justitia and says, Justitia, I feel I am losing my eyesight. Oh. And the first shock that Justitia receives is, oh, how will I go to Paris now if this man becomes blind? She is not worried about the eyesight of her husband. She is worried about her ambition, which is in danger now, which is at a risk now. If he loses his eyesight, what poor Justitia will do to fulfill her ambition? She says, okay. अच्छा, अब क्या हुआ? जब इसने देखा कि क्लाइम की आईसाइट लूज कर रहा है वो, इसने दोबारा वेल्डीव के साथ अपने रिलेशंस बढ़ाने शुरू कर दिए. Who is Veldiv? She tried to reassociate herself. She began to reassociate herself with Veldiv. वेल्डीव पता है कौन है आजकल? किसका हस्बैंड है वो? टॉमसिन का. तो क्या इसकी मदर ठीक कहती थी कि शी इज अ विच? ठीक कहती थी ना. ये चुड़ैल पता नहीं कितने लोगों की मोहब्बतों को खा जाए, या कितने लोगों को खा जाए. अब ये क्लाइम से छुपकर मिलती है वेल्डीव से. तो वेल्डीव से छुपकर मिलने का मतलब क्या हुआ? कि शी इज नॉट अ गुड वाइफ, शी इज नॉट अ गुड ह्यूमन बीइंग. You can say, but who is to be blamed for this all? Justitia is to be blamed for this all, not Veldiv. अब क्या हुआ? दिन गुजरे तो क्लाइम की आई साइट ज्यादा खत्म हो गई. He has become semi-blind. Clive has become semi-blind. But Justitia did not marry a blind man at all.
She married a person who was very handsome, young, enjoying a lucrative business of diamonds in Paris. अब क्या हो गया? ये वो वीक बुनियाद थी जिस पे इसने शादी की और वो बुनियाद खत्म हो गई. देखिए, नोबिलिटी वो बुनियाद है जो खत्म नहीं होती. कैरेक्टर इज अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन. Man can physically be disabled, but man cannot be disabled in character. If he is the man of character, if he is the man of credibility, credentials. इंसान का किरदार बीमार नहीं होता, इंसान का जिस्म बीमार हो जाता है. अगर आपने किरदार को बुनियाद बनाया होता तो ये दिन देखने को ना मिलते यूस्टिशिया. इसने बुनियाद बनाया था अपनी एम्बिशन को. अब कुदरत का काम देखिए. जिस ब्यूटी से मुतासर हुआ था क्लाइन, उस ब्यूटी को देखने की आंखें ही चली गई. ये सा यही कहा था, मेरी आंख देख सकती है, सो मुझ पे टूट पड़ा सारा शहर नाबीना. Now Klein cannot carry on his business in Paris. अब वो बिजनेस तो नहीं कर सकता पेरिस में, because he has become semi blind. But the livelihood, for his livelihood he is to do something. रोटी रोजी के लिए तो कुछ करना पड़ेगा ना. Consequently he has become a furze cutter. Furze cutter. He has become, Klein has become furze cutter. फर्ज कटर क्या होता है? व्हाट इज फर्ज? झाड़ियां, खुश्क घास. खुश्क घास को फर्ज कहते हैं. ये वो फर्ज नहीं जो उर्दू वाला है, अपना फर्ज निभाना. वालिदैन ने बड़े बच्चे हो जाए तो अपना फर्ज निभाना होता है ना, ये वो फर्ज नहीं. He has become फर्ज कटर. क्या इसने, did she marry a फर्ज कटर? Did Eustacia marry a फर्ज कटर? बताइए. इसने तो एक हीरे का कारोबार करने वाले से शादी की थी. इसने किसी घास काटने वाले से थोड़ी शादी की थी. तो अब क्या करे? अब क्या करे? अब किस्मत को रोए. वही फेट, वही चांस. वही फेट, वही चांस. Yeah, he too did not see. He too did not see her character. Definitely, both the sides. Both the sides equally. Yeah. Sir, but Klein loved her truly. You used to say that he keeps on loving her. He did not betray her. Till the last season, after he was gone from this world, he missed her. There is no question of betrayal. After, yeah, you in one aspect you can say that he did not betray her, but he was not in such a position to betray her. He was in a sorry state. Betray वो करते हैं जो इस पोजीशन में हो कि उनके पास कई और ऑप्शंस हो और वो पिछलों को बेट्रे करके आगे निकल जाए. Sir, he did not even try to search any option. Sorry? Sir, he did not try to search any option. How could he? Sir, He was just a first cutter now. He has lost his social position. He has lost his economical position. And he has lost his physical position. He is no more what he has been. He is no more what he has been. So, in such a terrible condition,
He needs the assistance of others. He needs the help of his wife. Because in some terrible conditions, when you are under a cloud, the person who can help you the best is your wife, is your life partner. Not wife is your spouse. अगर कोई खातून चली गई तो उसका हस्बैंड, और अगर कोई मर्द चला गया तो उसकी बीवी, is the only person in the world who can stand by him or her. But युस्टिशिया ने अब मुलाकातें बढ़ा दी. वेल्डीव से कहती है, वेल्डीव, कैन यू टेक मी टू पेरिस? कैन यू टेक मी टू पेरिस? या, आई कैन. व्हाई नॉट माय डियर? आपको पता है फिर मेल तो होते ही ऐसे, है ना? जमीनों के कलाबे आसमानों से मिला देते हैं. मैं आपको मैं पेरिस जहाज पे, गाड़ी पे नहीं, पलकों पे बिठा के लेके जाऊंगा. Sir, as far as our society is concerned or anything like that, so a male can never dare if a lady doesn't love him. श्योर, डेफिनेटली. Here you can say that. ये तो हम पहले ही बात कर चुके हैं ना, कि ये युस्टिशिया ने स्पेस दी उसे तो वो आया ना, वरना वो क्यों आता? और जब स्पेस मिल गई तो फिर वो उसकी जो ट्रांसपोर्टेशन है वो इसकी पलकें हैं. पलकों पे बिठा के लेके जाऊंगा जनाब. आप, मैं उसे डांटूंगी कि क्लाइंट, यू डिडंट डू एनीथिंग राइट विद मी. फिर मैं उसे प्यार करूंगी. आई विल लव हर बिकॉज शी इज थर्स्टी ऑफ लव फॉर मंथ्स एंड ईयर्स. फिर मैं क्लाइंट के पास बैठकर घंटों बातें करूंगी उसके साथ. ये पहाड़ जैसे इमेजेस लेके आई है बेटे के पास सुलह करने के लिए. आपके दरवाजे पे दस्तक नहीं दी, इसने बेटे के दिल पे दस्तक दी थी कि आ गई हूं मैं. जब युस्टिशिया उसे देखती है तो ये भागती है पीछे को. इस नुक्ता नजर के तहत कि खुद क्लाइंट कमरे में ही है ना, बोल देगा मैं वेल्डीव को पिछले दरवाजे से दफा करूं. जाके कहती है, वेल्डीव, go away. The old woman is there outside. ये फिर लॉक है. अब देखिए, किसी को यकीन है कि बेटा भी घर में है, बहू भी. दरवाजा ना खुला, नहीं खुला, क्योंकि क्लाइंट नहीं जाता. ये पीछे गई. इसने भी इरादतन उसे बाहर नहीं रखना चाहा. ये चाहती है, इसका ये ख्याल है कि क्लाइंट खोलेगा. एंड व्हेन शी नॉक्स thrice and there is no response from the inside of the house, now her heart is totally broken. She is collapsed. All her images are dashed to ground. She is stricken, toppled, trampled, torn into pieces, with the thought that her son and daughter-in-law are not ready to let her in. They have locked her outside of the house deliberately. ये सोचकर कि इन्होंने दानिस्ता मुझे बाहर रखा. ये नहीं चाहते कि मैं खाना खाऊं. ओके, अब हम नेक्स्ट कल इंशाल्लाह देखेंगे.